चैप्टर 5 सोर्सेज ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. इसके लिए रीजन बताना है ना. क्लोज ड्राई फास्ट व्हेन ड्राइड इन द सन. वाटर फ्रॉम नेचुरल sources of unfit for drinking. Answer the following question. What is the difference between snow-fed river and rain-fed river? Okay, discuss between evaporation and condensation. Mention the factors that increase the rate of evaporation. How is salt extracted from sea water? Explain briefly. Explain the water cycle. Support your answer with a diagram. Okay, now let's see the answer. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर लिखोगे, फिर सोर्सेज ऑफ वाटर, देन यहाँ पे डेट लिखोगे. ओके, सो फर्स्ट क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. क्यों है, चलिए जानते हैं. सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी. आई रिपीट अगेन, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी. नेक्स्ट, clothes dry faster when dried in the sun. Answer is clothes dry faster when dried in the sun because in summer season there is no humidity in the air. ठीक है, clothes dry faster when dried in the sun because in summer season there is no humidity in the air. Next, water from natural sources is unfit for drinking. Answer is water from natural sources is unfit for drinking because rainwater cannot consumed as it has many gases, dust, particles and germs in it. River, lake, ponds are polluted by garbage disposal and factories toxin in it. ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं. यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नो फिड रिवर एंड रेन फिड रिवर. ओके, स्नो फिड रिवर और रेन फिड रिवर के बारे में हमको डिफरेंस बताना है. फर्स्ट, स्नो फिड रिवर, व्हेन snow or ice melt in the high mountain, it flow down to from rivers. Such rivers are called snow-fed rivers. I repeat again, when snow or ice melt in the high mountains, it flow down to from rivers. Which rivers are called snow-fed rivers? Rain-fed river. Rivers that carry only rain water are called रेन वाटर. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस बिटवीन इवाइब्रेशन एंड कंडेंसेशन. इवाइब्रेशन on heating water change into water vapor and move up. This is called evaporation. ठीक है, नेक्स्ट, कंडेंसेशन on cooling water vapor change back to drops of water. This is called condensation. ठीक है, on cooling water vapor change back to drop of water. This is called condensation. Mention the next आंसर देख लेते हैं. ओके, सो आंसर इज sweat from our body dry due to evaporation. Wet clothes dry when we put them in the sun. Next question is, how is salt extracted from sea water? Explain briefly. Salt कैसे बनता है sea water से? Salt is extracted from sea water using the process of evaporation. Decades are made on the shore to prevent sea water from falling back into the sea. These areas with decades are called salt pans. Okay, the water in these pans gradually evaporates, leaving a layer of salt behind. Okay, explain the water cycle.
योर आंसर विद द डायग्राम. ओके, ठीक है. डायग्राम भी हमको बनाना है. वाटर इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर cycle. During the circulation it keeps changing it from water evaporation from river, lakes and other water, but it's because of the heat of the sun. Some of this water change into water vapor and rises in the sky. As it goes higher it meets cloud air and condenses from cloud as more and more drops join the clouds. They become heavy and brush this water from the clouds. Okay, this water from the cloud reach the ground in the form of rain, snow and sleet. Like this आपको डायग्राम भी बनाना है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक पे डन करने हैं एंड ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो लाइक दिस. ओके, यस. नाउ टाइम टू से बाय. बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.